Hello, good morning everyone. Welcome back to this channel. Have you ever written a letter to anyone? Or have you ever got a letter from anyone? And what is a letter? It is a medium of communication. Jogajogara madhyama. Nowadays, writing a letter is not so essential as mobile meets that need instantly. Anyways, here is a story about a letter which has been written to God. Lencho, a farmer, writes a letter to God asking for a sum of money when his crops fail. He has firm faith in God that God will help him in his need. So, let's read the story of Letter to God written by Gregorio Lopez Fuentes or G.L.Fuentes, and this is the second chapter of class 10 English book BSc Odisha. So before reading the text, let's know about the writer. G.L.Fuentes, he was a famous Mexican novelist, poet and journalist, and he started writing at the age of 15 when the Mexican Revolution began. His stories are exciting and humorous, and he was awarded the National Prize of Arts and Science in 1935. In this session, I will go for three things. One, that is reading aloud the text. Second one, comprehension check. And the third one, activities related to the text. So I would like to request you to watch the video till the end. And if you are new to this channel and have not subscribed it till now, please subscribe the channel and enjoy all upcoming videos. So without wasting much time, let's start today's class. Every story has 5 basic things: time, place, character, problem and solution. Then what is the time? Time is past. A story ro time hochi past time. Then what is the place? Place is a lonely house in the entire valley that sat on the crest of a low hill. गोटे एंटायर वैली रे से उपत्यका रे, वैली कहले उपत्यका, से उपत्यका रे गोटे सिंगल घर थिला. आ सेटा कोठी थिला? That sat on the crest of a low hill. गोटे छोटो पहाड़ रो टॉप रे सेटा थिला गोटे सिंगल घर. And third one is character. Character is Lencho, a farmer, who is the main character, and his family members. And the next one is problem. What is the problem? Lencho had a cornfield and the earth needed a downpour or at least a shower for good harvest. And it was rained, but there is suddenly a twist. The rain changed into a storm. A strong wind began to blow and that turned into a hailstorm. And due to hailstorm, his cornfield totally destroyed. And the last thing is solution, and Lencho solved that problem. Lencho wrote a letter to God asking for some financial help. Though his letter did not reach the destination, still he got a part of his request which he could not disbelieve. He thought God helped him. So this is the gist of the story. Now let's read the story. A letter to God by G.L.Fuentes. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height, one would see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast.
Now we are really going to get some water, woman. The woman who was preparing supper replied, Yes, God willing. The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, Come for dinner. It was during the meal that, just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned, he exclaimed, These are not raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5s. আজি এই দুইটি paragraph পঢ়িবা. So dear students, now it is the time for comprehension check. Here are some questions for paragraph number 1. Paragraph 1 पाई एठी किछि क्वेश्चन अछि. ए क्वेश्चन माध्यमरे आमे स्टोरी टाकू आउ टिके भलो भाबरे बुझिबा. तेबे एई क्वेश्चन सब आलोचना करिबा पूर्वरु आउ तीनिटी क्वेश्चन. The writer of the story A Letter to God was dash. Answer कोन हबो? Yes, G.L.Fuentes. Fuentes started writing at the age of dash. तांको केते वर्ष हेथिला जेतेबेले से लेखा आरंभ कले? At the age of 15. Next question. He was awarded the National Prize of Arts and Science in dash. Answer is 1935. Okay? ताले एबे आमे एई क्वेश्चन सब आलोचना करबा. Question number 1. Where did Lencho live? Lencho कोठी रहउथला? Lencho lived in a solitary house on the top of a low hill. On the crest of a low hill अछि. Crest माने top or highest part of the hill. गोटे छोटो पहाड़र ऊपर भागरे बा टॉप रे गोटे एकुटिया घर रहिथिला. सेई घरे लेंचो रहिथिला. Next, what were the things one would see from this height? सेई उच्चतारु जणे कोन जिंस देखि पारथला? की जिंस देखि पारुथिला? कोन थिला से सबु? The river, the field of ripe corn that dotted with flowers. The river, nodi, and the field of ripe corn. पाचिला शस्य खेत dotted with flowers, जोथरे की फूल भर्ती हेथिला. And the next question, what did he hope for? से को जिंस को आशा करिथिला? He hoped for a downpour or at least a shower of rain, which was only thing the earth needed for a good harvest. माटी सेतिकी ही दरकार करूथिला at least असराय वर्षा जोथि पाई कि भलो फसल हेई परिबो एवं लेंचो भलो अमल करि परिबो. तेनु वर्षा होबाकू लेंचो आशा करिथिला. नेक्स्ट क्वेश्चन. Throughout the morning, Lencho saw the sky towards the dash. Throughout the morning, अर्थात सकाळ पाखरु सकाळ सारा लेंचो कोन करूथिला? लेंचो saw the sky towards the आकाशर को आड़ को चाहुथिला? Towards the north east. उत्तर पूर्व आकाश को से चाहिकरी रहउथिला. कोन पई? मेघ आसीबो कि एई आशा रे से नॉर्थ ईस्ट आकाश को चाहिकरी रहउथिला. नेक्स्ट क्वेश्चन. How did he know his fields? सी तार फील्ड को, तार जमी को, तार खेत को केमती भाबरे जानिथिला? He knew his field intimately. कहले अति अंतरंग भाबरे से जानिथिला. Now these are some comprehension questions of paragraph number 2. Let's discuss all these and understand the text. Question 1. Who said yes, God willing? किए कहला? Lencho's wife. केतेबेले कहला? जेतेबेले लेंचो आसी के कहूची we are really going to get some water, woman. जे आमे प्रकृत रे किछि पानी पाइबा को जाउछु. सेतेबेले ता स्त्री कहितला yes, God willing. जे भगवान चाहिले बा भगवान चाहुचंती. नेक्स्ट, what was she doing? सेतेबेले से कोन करूथिला?
she was preparing supper. Supper means dinner. रात्रि भोजन से प्रस्तुत करुथिला. Then when Lencho's wife called her children to have dinner, the older boys were days while the smaller ones were days. जेतेबेले लेंचर वाइफ समस्त को डिनर पाई डाकिला सेतेबेले ओल्डर बॉयज माने कोन करथले. द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड व्हाइल द स्मॉलर वंस वेयर प्लेइंग नियर द हाउस. से माने घर पाखरे खेलुथले. सान पिला माने खेलुथले, बड़ पिला माने फील्ड रे काम करुथले. नेक्स्ट, व्हाट हैड लेंचो प्रेडिक्टेड. लेंचो कोन प्रेडिक्ट करथिला, कौन से आगु को हवा को जाउछ बोली कहिथिला. लेंचो हैड प्रेडिक्टेड दैट दे वर गोइंग टू गेट सम वाटर. जे से माने प्रकृति रे किछि पानी पाइबा को जाउछन्ती. पानी कहले वर्षा पानी पाइबा को जाउछन्ती. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द रेन बिगन टू फॉल. वर्षा केते बेले हैला. इट वाज ड्यूरिंग द मील टाइम. से माने जो रात्रि भोजन करिबा को बसथिले सेही समय रे वर्षा आरंभ हो गला. देन व्हाट कुड बी सीन इन द नॉर्थ ईस्ट. उत्तर पूर्व आकाश रे कोन देखा जाउथिला. इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग. नॉर्थ ईस्ट आकाश रे कला हांडिया मेघ उठेई थिबारो बा बादल सब ढांकी हेई थिबारो देखा जाउथिला. ता माने वर्षा हबो. देन हाउ वाज द एयर. The air was fresh and sweet. Okay, next. Lencho came out leaving his dinner to days. Lencho जो dinner पाई बसतिला से बाहर को बाहरी आसला. कौन पाई. To feel and enjoy the raindrops on his body. ता देहरे वर्षा पानी पड़िबो आउ से फील करिवो, आनंद उपभोग करिवो, एन्जॉय करिवो. सेति पई से खाइबा छाड़ी करी बाहर को उठी आसीतिला. नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंचो कंसीडर्ड द रेनड्रॉप्स एज डेज. जो रेनड्रॉप पडुथिला, जो वर्षार टोपा पडुथिला ताकू लेंचो कोन बोली कंसीडर कला, कोन बोली ताकू ग्रहण करुथिला. एज न्यू कॉइन्स. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, द बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन आर ट्रीटेड एज डेज एंड द लिटिल वंस आर डेज. जो बड़ बड़ वर्षा टोपा पडुथिला ताकू लेंचो कोन बोली कंसीडर करथिला. एज 10 cent pieces and the little ones are 5 cent pieces. सेंट कहले आमे हमर मुद्रा को जेमिति पैसा बा टंका बोली कहूछु, रुपी बोली कहूछु, तांको देशर मुद्रा को सेंट कुहाउथला. कॉइन को सब सेंट कुहा जाय. तेनु जो बड़ बड़ टोपा थिला लेंचो पई से गुडा को 10 cent pieces थिला. आ जो सानो टोपा थिला लेंचो पई से गुडी को 5 cent pieces भली थिला. So students, now it is the time to discuss the third point, that is activity related to the text. Let's learn language. ए language रे हमें कोन पढिबा. relative clauses. ए relative clauses उपरे आगरु भी वीडियो करिकरी दिया हैछि. जदि तुमे ताकू देखि ना हो ताहले तार लिंक मु डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे देई देबी. सेठी तुमे देखिले आ टिके भलो किना बुझी परिबो. ताहले एबे देखिबा कोनी से relative clauses कोन से एठी अछि कोन देखिबा. सेठी बही रे हमर फर्स्ट पैराग्राफ रे गुटे सेंटेंस अछि. दिस सेंटेंस इज देयर. Throughout the morning, Lencho, who knew his cornfields intimately, looked at the sky. एठी हमें देखु छे सेंटेंस रे एठी गुटे हाइफेन अछि, एठी गुटे हाइफेन अछि. ए जगह रे हमें एठी कॉमा भी यूज करि परिबा. हाइफेन किछि जण हाइफेन भी लेखंदी, किछि कॉमा भी लेखंदी. तो एई पार्ट टा को who knew his cornfields intimately एटा को अंडरलाइन करा है जी. This underlined parts of this sentence provide us more information about Lencho. Lencho विषय रे हमको आउ किछि अधिका इंफॉर्मेशन दोछि. Lencho कहले it is already identified. Lencho कहले तार आइडेंटिटी हमको जणा अछि. Lencho कहले गुटे व्यक्ति रो नाम निया अछि, से फार्मर रो नाम निया अछि. It is already identified. तेनु ए क्लॉज टा हमको लेंचो विषय रे अधिका इंफॉर्मेशन दोछि. तेनु ए क्लॉज टा को हमें कोन कहिबा. non defining relative clauses. There are two types of relative clauses which is discussed in earlier videos. से क्लॉज टा गोटे पर्सन को
चिन्हिबारे साहाय्य करथबा डिफाइन करिबाकू बा आइडेंटिफाई करिबारे साहाय्य करूथिबो से क्लॉजटा होची डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज किंतु ये होची नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज कहले जे कि से पर्सन को चिन्हाएनी बट इट गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट पर्सन डिस्क्राइब्ड ताले एठी हु knew his cornfields intimately is the non-defining relative clause. A relative clause रा में कौन देखिबा? It begins with who, that is a relative pronoun. Other relative common relative pronouns are which, that, whom, whose, why, when, where, how, all these. Okay? ये सब relative pronoun हमें यूज करिथाउ रिलेटिव क्लॉज पाई आउ कोन अठी अछि ए रिलेटिव क्लॉज रो जोटा अंडरलाइन पार्ट अछि एटा उटे रिलेटिव क्लॉज नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज तारो आरंभ रे गोटे कमा जोटा हाइफेन भी अछि ती कमा भी दिया जाई परिबो तारो बिगिनिंग रे गोटे कमा रहउछि आउ एंड रे भी गोटे कमा रहउछि आउ जते बेले गोटे नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज ता जति सेंटेंस रो लास्ट रे रहउछि ताहले सेठी आउ कमा न देकरी सेठी हमें जस्ट गोटे फुल स्टॉप दे परिबा ताले नॉन डिफाइनिंग क्लॉज रे जो हु रिलेटिव प्रोनाउन यूज करा है कहा पई दैट इज यूज्ड फॉर लेंचो जोटा कि ए क्लॉज ता लेंचो विषय रे अधिका इंफॉर्मेशन दोछि एबे आमे किछि एक्सरसाइज करिबा ठीक अछि जॉइन द पेयर ऑफ सेंटेंसेस एठी तीनटा पेयर ऑफ सेंटेंसेस अछि ताकू आमे जॉइन करिबा आउ ए दीटा सेंटेंस भितरु गोटे को आमे नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज करिबा तापरे गोटे बड़ सेंटेंस करिया बा गोटे सिंगल सेंटेंस गोटे करिबा जेमते एटा गोटे सिंगल सेंटेंस अछि एटी दीटा पार्ट अछि एटी सेमते दीटा पार्ट को जोडी कि आमे गोटे लंबा सेंटेंस करिबा कोन करिया ताले एटी मदर टेरेसा इज रेवर्ड एज ए सेंट शी सर्व्ड मैनकाइंड दीटा सेंटेंस रो समान अर्थ बुझौथिबा शब्द को आमे खोजिबा बा आइडेंटिकल वर्ड्स they are in the first sentence that is mother teresa and second sentence that is she second step आमे कोन करिबा ए जो सेकंड सेंटेंस रे जो she अछि ए जगह रे आमे गोटे रिलेटिव प्रोनाउन यूज करबा कोन रिलेटिव प्रोनाउन यूज करि परिबा ता जगह रे आमे who बसै देई परिबा कारण she जगह रे who ही बसिबो तो वर्तमान हमरो क्लॉज रे कोन हला who served mankind थर्ड स्टेप कोन होची एटा आमे गोटे रिलेटिव क्लॉज तयारी करले जोटा कि नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज सेटा कोठी बसेबा जहा को सेटा जहा पाई सेटा यूज होची बा जहा पाई एडजेक्टिव भडिया सेटा यूज हेची कहा पाई सेटा यूज हेची मदर टेरेसा पाई तेनु एई मदर टेरेसा पाखरे एई क्लॉज ता बसिबो ताले हमरो सेंटेंस कोन हबो मदर टेरेसा कॉमा हु सर्व्ड मैनकाइंड कॉमा इज रेवर्ड एज ए सेंट Okay, next देखिबा I often go to Mumbai. Mumbai is the commercial capital of India. दीटा सेंटेंस रो समान शब्द कोन मुंबई एठी भी मुंबई वर्तमान सेकंड स्टेप होची ई सेकंड सेंटेंस रो जो आइडेंटिकल वर्ड रहिछि ता पई आमे गोटे रिलेटिव प्रोनाउन यूज करिबा एठी आमे कोन यूज करि परिबा which ताले हमरो क्लॉज ता कोन हबो which is the commercial capital of India ओके ताले हमरो न्यू सेंटेंस कोन हला I often go to Mumbai comma तापरे which is the commercial capital of India full stop कारण तापरे हम किछि नाही ए नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज ता सेंटेंस रो लास्ट रे रहउची तेनु हमें लास्ट सेठी आ कमा न बसै कि सेठी हमें फुल स्टॉप बसया And the last pair of sentence. My mother is going to host a TV show on cooking. She cooks very well. एबे कोन करिया फर्स्ट स्टेप दीटा सेंटेंस रो हमें आइडेंटिकल वर्ड खोजिबा कोन अछि एठी my mother and she तापरे कोन करिबा सेकंड सेंटेंस रो आइडेंटिकल वर्ड जगह रे रिलेटिव प्रोनाउन बसेबा एठी कोन बसै परिबा she होचे आइडेंटिकल वर्ड कोन बसै परिबा सेटा वर्तमान तुम पई काम तापरे बसई साला परे सेही क्लॉज टाको ए सेंटेंस रो को जगह रे बसई कि हमें गोटे न्यू सेंटेंस तयारी करबा सेटा भी तुम काम एबे से न्यू सेंटेंस तुमे लेखि करी कमेंट बॉक्स रे निहाती दबो दिस मच फॉर दिस सेशन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो सो थैंक यू वेरी मच।